है आपको, मतलब आप समझते हो और रिप्लाई कर सकते हो, करते हो? ऐसा कह सकते हैं मैम, जब जैसे सीख रहा था तब तो फ्लुएंट था बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीत गया तो माहौल नहीं मिला, तो थोड़ी झिझक सी आ गई, और झिझक आने के कारण फिर बिल्कुल ही थोड़ा दो फ्रेंड सर्कल भी बिल्कुल थोड़ा अच्छा वाला था जिसे बोलते हैं, तो इस वजह से अच्छा इंग्लिश। अच्छा अच्छा, मैं समझ सकती हूँ। और आप बताओ, अभी हम कम्युनिकेशन के बारे में बोलेंगे थोड़ा। आपको टेंसेस के बारे में तो सब कुछ किया गया होगा, मतलब क्या फॉर्म है, टाइम फॉर्म है, सब कुछ ऐसा। हाँ जी मैम। अच्छा, तो आपके पास पेन एंड पेपर है, कॉपी है? हाँ मैम। अच्छा, आप कुछ लिख सकते हो? अगर मैं लिखाती हूँ तो आप लिख सकते हो? हाँ जी मैम। वेरी गुड। आप पेन एंड पेपर ले लो। यस मैम, बोलो। वेरी गुड। प्रेजेंट टेंस के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब कुछ है आपका आइडिया इसके बारे में कुछ? वही है मैम, 3 तरह के टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट हमारे पास जो करंट है उसको बोलते हैं, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो अब आएगा। प्रेजेंट हाँ, ये आपने सही कहा। इस एमआर का यूज करते हैं, और पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और हैड का यूज करते हैं, और फ्यूचर में हम शैल और विल का यूज करते हैं। वाओ, वेरी गुड। आपको तो आता है। बट यही आता है मैम, जिसे बोलते हैं ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ, बट ये थ्योरी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की थोड़ी सी भूली हुई सी है। अच्छा अच्छा। जैसे आप मतलब आप बोल के ट्राई कर सकती हैं, मतलब मेरे को कि मैं कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, जैसे मतलब कि जैसे आप बातचीत कर सकती हैं, कम्युनिकेशन मेरे साथ कर सकती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन थोड़ा करते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन में करेंगे, मान लीजिए मुझे आप मेरे मतलब कस्टमर हो और मैं शॉपकीपर हूँ, ठीक है? तो शॉपकीपर में क्या होता है, आप मुझे मोबाइल बेचोगे, मतलब मैं आपको मोबाइल बेच रही हूँ, ठीक है जी। तो आप मुझे आंसर करोगे, तो हम 5 मिनट तक देखते हैं क्या होता है इसका हाल, मतलब इस कम्युनिकेशन का हाल, ठीक है? जी मैम। ठीक है, ओके। तो आप कस्टमर हो, अभी आप मुझे बोलो कि आपको मोबाइल की जरूरत है ऐसे। हाँ जी मैम। जैसे अभी मैंने एंटर किया, आई एम एंटरिंग टू द शॉप नाउ। Now I am looking to the shopkeeper, mean salesperson, towards Yeah. for purchasing the mobile. So I am telling you, hello, hi, how are you? How can I help you? And today I am here for purchasing a new mobile. About my budget is 15 to 20,000. Okay, very good. You have your budget in 15 to 20,000. Okay, 15 to 20,000. It is very big amount of money. You can get a very good mobile in that amount. No need to worry about that. So tell me, what kind of mobile? Which company you need? Provide me a mobile that in 1 second, that in a current flow, mean updated mobile. कैसे बोलेंगे? Updated mobile. That means it is recently launched. Yeah. It is recently launched. Okay. So you can take this one. Oppo also you can take. It is a very good mobile. Vivo's Y25 Pro. It is also correct. Samsung Galaxy 56. That one is also coming in under your budget. So what do you need? Tell me something about your companies. Which company you need? And I don't need a preferred company, mean any specific company. I need a mobile that come in 20,000 with higher preference, mean best in budget in 20,000, mean best mobile in
20,000 budget. Okay. Already I told you That you that, think. yeah, already I told you that you can get a very good mobile and very newly launched mobile in this budget. There is no problem to worry about that. And tell me something about RAM and ROM. Which RAM and how much RAM and ROM you need in the mobile? And my minimum requirement about 8 GB RAM and 128 ROM, and something the camera is also good, like focus on like a Apple type camera, and mobile screen 90 to 120 hertz. Okay. Oh, basically, girls are demanding the mobile that should be best of giving. That should be the quality full camera. They are searching because they are using that selfie and all like that. That's why they are searching. But boys also searching the camera, good camera mobile. That is very rare. I have heard. Yeah, when in our shops many customers are coming, but here their boys are just watching that they should work on the game and all. That game should be proper, the game should run and all, so that, and battery mileage also should be very good, like that their preference is there. But you are the new person here coming and telling that camera should be very new. Yeah, it's Actually, ma'am, I am a traveling person. For a traveler, for an adventurer, the camera is a basic need. He have to go to different places and take a pictures of that places. Oh yeah, that means you are really passionate about photography. Is it like that? Something like this, ma'am. Oh my God, really, I do love photography. I do love photography, and it is a good match for me. I got a client, I got a customer like you, and you are also very fond of photography and all. But if you are really willing to take the photography and all, then you are, don't you think that you have to go at a bit level up your budget? If you have to level up your budget, then only you will get a very good camera and having very good capacity, pixel and all, 13 pixel, and that is 25,000, and it is, I think it is Nothing. You know the company's name, Nothing? Yeah, ma'am, I hear about that, but it's rarely hear about that company. Oh yeah, okay, but this company is doing a lot of efforts for making its cameras and all of them. Basically, for it's working on camera so that it can get a very good customer by working on it. That's why I told you. And if you can level up your budget, then you can go for it. And otherwise, up to how much your budget is, that is also, there are also the availability of mobiles, so you can get a very good mobile on under your budget. So, ma'am, in your shop there is any facility about what to I speak about, ma'am? Installment. Yeah, installment. Yeah, installment facility have if you are a working person. If you are a working person, then installment facility having. But on the 20,000, if you want to take the installment, then at a time you have to give us payment approx 7,000 to 8,000, and remaining will be in installment. So, are you ready for that? So, ma'am, I think that I go to the Nothing brand mobile. So that's why I asked you the installment. Oh, that's what you are telling, that you want the Nothing company's mobile, and then you want to level up your budget, and after that you want to take this mobile with installment and giving some amount of money in advance. Is it like that? Yes, ma'am. Oh wow, very good, nice. Okay, then what do you do? What's your profession actually? We have to know, we have to write all these things so that we can make a that means bill of all these things, and a bill or of your payment and all. Then we can proceed you, and we can make the installment like that. Nowadays, ma'am, I am in a sales department in a tuxedo company.
Okay, okay, okay. So, how, if you don't mind, how much you is your salary? 50? Not much more. This is 16,000, ma'am. 16,000. So, are you able to pay the installments and all, everything after giving the advance payment, at a time payment 8,000 and something? Can you provide me the, ma'am, complete installment process document and the what is the installment for monthly basis and what is the down payment that I have to pay at the time? Okay. First of all, I can provide you every details of it. And first of all, you have to give me your Aadhaar card and your phone number, your address and all, so that I will fill up all the form and all. And after that, it will show me, system will show me how much down payment we need and how much will be the installment part. That one will be decided. So give me this one after some days. When you will be giving me all these things, then your installment setup will be done, and you can use Nothing Mobile in your comfortability. Okay. So are you Okay. ready to buy this? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Come here again, and we will have your documents, and then we will provide you the mobile, and you can use it, and you will feel very comfortable by using this mobile. Yeah. So thank you Only for Aadhaar card, coming ma'am? here. Yes. Not Yes. not other document? Yeah, only Aadhaar card we need, and your address proof, if you can give, it is very good for us. These two documents are enough for making you very the installment process for you. Okay. Okay, ma'am. Okay, so thank you so much. Come with the documents, and then we shall proceed the next things, and wish you all the best. You will feel very happy by using this mobile. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Wow, it is a great discussion. What's your name? Deepak? No, yeah, ma'am. No, ma'am. There is my complete mistake that I am very, मतलब बहुत ज़्यादा अटकता हूँ. I am. That is not जो your बोलना fault, चाहता हूँ, उस Deepak. टाइम पे वो वर्ड आता नहीं है. That is not your fault. That is not your fault. ये आपका दोष नहीं है. देखो, क्यों आपका दोष नहीं है, मैं ये बोल, देखो, आपका what is your mother tongue? Hindi. In how much time you, in 24 hours, how much time you talk in Hindi? Completely 24 hours. Very good. And how much time you talk in English? About 5 to 10 minutes. So Because I am there is the result. practicing about- जिसको लेकर जिसको आप जितना टाइम दोगे वो इतना ही बढ़ेगा. अगर आप हिंदी को 24 आवर्स ही टाइम दोगे तो ये हिंदी ही आपके लिए एकदम पूरा बैठ जाएगी आपके गले में, मन में, एकदम दिमाग में. और अगर आप 10 मिनट्स इंग्लिश को दोगे तो हिंदी जीतेगा या इंग्लिश जीतेगा? आप बोलो मुझे, कौन जीतेगा? हाँ, वो तो है मैम. तो इसमें किसकी गलती है? गलती तो किसी की नहीं, क्योंकि आपको एनवायरमेंट वो अगर आ जाता, आप अगर अमेरिका में चले जाते 1 महीने के लिए, तो आपको कोई मतलब हिंदी बोलने, आप हिंदी भूल ही जाते और इंग्लिश में ही आप बात कर सकते, है ना? वो एनवायरमेंट, दैट इज द एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई पीपल आर टेलिंग दैट एनवायरमेंट इज रियली पावरफुल. What you are becoming in the surrounding, no, what you are getting in the surrounding, that is you are getting. That will come into your life. That will come into your life. जो आप अभी कर रहे हो वही आपको आएगा, है ना? So you have decided, if you have decided to talk in English, to work on English speaking, then it is a very good time for you to take the sessions and come on the sessions at least 1 hour. If you are talking, then 30 days you are talking 30 hours, isn't it? So 30 hours talking in the English, in this language, in English, in spite of not talking in it in any time, that will create the difference. That will create the difference. आपने समझा है मैंने क्या कहा? हाँ जी मैम. आप बोलिए तो मैंने क्या कहा, हिंदी में ही बोलिए आप. आप हिंदी में बोलिए, मैंने क्या कहा बोलिए. मैम आपने बोला कि आप महीने भर तक अगर आप जैसे 30
30 दिन का सेशन लोगे, इसका मतलब 30 घंटे हो जाएंगे, और 30 घंटे का सेशन लेने के बाद आपको खुद अपने में पता लगेगा कि क्या आपने सीखा। Very good, very good. And one thing is that, another thing is that when you will be taking sessions, you will be talking with me, you will be talking with other students, isn't it? And your bonus point is you know already. Your bonus point is you know already. And whatever you have talked with me, that is also a communication you have done. If you can give, if you are telling me that how much mark I will give you, then out of 10, then I will give you 7 out of 10, and 3 I will not give you, because only for 3 marks only you have to work on that. Did you understand? Okay. That is the Yes, thing. ma'am. That is the thing. That is the thing. आपको बोलने की कोई एनवायरमेंट नहीं मिला, या कोई वेदर नहीं मिला, या बोलने का कोई साथी नहीं मिला, इसलिए आप ऐसे हो। पर आपने बहुत अच्छा मुझे साथ दिया। जब कम्युनिकेशन चल रही थी बायर और सेलर में, आपने मेरा साथ बहुत अच्छी तरह से दिया। इसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब ये क्या है, खुश होने की बात है कि मुझे जो कैंडिडेट, मेरे साथ जो कैंडिडेट बैठेगा या मतलब समझेगा या बात करेगा, वो कुछ हद तक जानता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनको समझ में भी नहीं आता ABCD भी, आप तो जानते हो। That is your credit. That's why I am happy, and that's why you can catch the language very within a short period of time, because it is being taught you already. अभी आप बोलो, आप क्या बता रहे हो, आप क्या बोल रहे हो इस बारे में, आपका क्या बोलना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? टेल मी सम। एक्चुअली मेरे को इतनी इंग्लिश सीखनी है, मतलब कि जैसे सेल्स वाले जो होते हैं वो, मतलब कि उनसे मैं बात कर सकूं। सेल्स डिपार्टमेंट में इनको इंग्लिश ही चाहिए है। जैसे कोई इंग्लिश में समझाता है ना, तो बंदा उसको पकड़ता है। हिंदी वाले को कम देखता है, जैसे ज्यादा पढ़े लिखे जो बंदे होते हैं हाई-फाई वाले, वो इंग्लिश वाले पे ज्यादा जाते हैं। तो उस लेवल की सीखनी है। तो आपको जो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, वो क्या इंग्लिश में बात करते हुए आते हैं क्या? नो मैम, जैसे अभी जैसे मेरा फ्रेंड वर्क कर रहा है, उसमें करता है वो, उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो, तो उनका सारा काम इंग्लिश में ही होता है। तो वो मेरे को बता रहा था कि सारे जितने भी होते हैं वो सब इंग्लिश में ही बोलते हैं, मैं ये खाली हिंदी में सुनता रहता हूँ। आप बाद में जो अपने टीम लीडर है उससे बात करके फिर समझता हूँ। अच्छा, और हालांकि आप जानते हो इंग्लिश में बात करना, हालांकि आप सीख चुके हो बहुत कुछ, टेंस के बारे में या टाइम फॉर्म के बारे में आपको तो कुछ कहना ही नहीं है, मुझे समझाना भी नहीं होगा, सिर्फ टॉकिंग करना है। और टॉकिंग का होगा ना, सिचुएशंस होगा। जैसे एक क्लाइंट्स आया, क्लाइंट्स के बारे में, वो है क्लाइंट्स कुछ अनपढ़ सा क्लाइंट्स, इसको आपको इंग्लिश में समझाना है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे, मतलब एक सिचुएशन बनाएंगे हम, जे उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, उसके साथ आप बात कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सेल करने की कला आपको अगर आ गई इंग्लिश में कराना, मतलब उसको इंग्लिश में बात करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, दैट इज योर सक्सेस, है ना? आपकी सक्सेस तो वहां पर है ना? कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ जी मैम। हाँ, तो यहाँ पर आपका सक्सेस है, तो आपको वहां पर काम करना होगा, ठीक है? आपको वहां पर काम करना होगा। तो आपके पास पेन एंड पेपर है? हाँ जी मैम। कुछ सेंटेंसेस हम ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं, ठीक है? ओके। आपको हिंदी लिखने में तो कोई मतलब ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, तो ट्रांसलेशंस कर लेंगे। पर इससे पहले मैं और एक बार आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा ये किया, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। नो मैम, मेरे को भी काफी टाइम बाद मतलब की बात हुआ किसी से ऐसे। पर आपने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत अच्छा।